हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन आईआईआर फिल्टर एंड एफआईआर फिल्टर। सो अब टिल नाउ हमने डिस्कस किया है आईआईआर फिल्टर क्या होता है, एफआईआर फिल्टर क्या होता है, हाउ टू डिजाइन आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस फर्स्ट। दिस filter stands for infinite impulse response filter. IR stands for infinite impulse response filter, whereas FIR stands for finite impulse response filter. This is the basic difference. Second, when we come across a definition, so we know that IR filter, in this particular filter, the output depends on present input sample, previous input sample, and output sample. So it is a type of filter whose output depends on present samples, previous samples, and output samples. Whereas in case of FIR filter, the output depends on present input samples and previous input samples. So this is about the definition of IR and FIR filter. अब देखिए इस वाले केस में जो आउटपुट है वो प्रेजेंट, प्रीवियस और आउटपुट सैंपल्स पे डिपेंड है. आउटपुट सैंपल्स यानी फ्यूचर वैल्यू हो सकता है. दैट इज वाई इफ यू कम फॉर द थर्ड डिफरेंस we can say this filter requires infinite memory, whereas finite filter, as output depends on present and past, it requires finite memory. Okay, clear? So in case of IR filter, infinite memory. In case of FIR, we need finite memory. Next and important, these filters are of recursive type. Yes, whereas these filters are of non-recursive type. This is foremost important term. Next, coming to the point, IR filters can be unstable. They can be unstable. Now, why they can be unstable? Because it requires infinite memory. One. Second, here output depends on present input, previous input and output samples. देखिए output किसके ऊपर depend कर रहा है? Present, past और future पे. That is why these filters can be unstable. Whereas in case of FIR filter, as output depends on present and past, जो हमें पता होता है, because of that these filters are always stable in nature. अब स्टेबिलिटी का पैरामीटर डिपेंड करता है पोल्स और जीरो के ऊपर. अगर फ्यूचर वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली इट कुड बी अनस्टेबल बिकॉज इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. वेरएज अगर फाइनाइट है टर्म तो जो भी आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा मे बी प्रेजेंट या फिर पास्ट के ऊपर. दैट इज वाई they can be stable. Next, infinite impulse response filter have impulse response of infinite length, यानी कि h of n जो होगा उसका लेंथ कितना होना चाहिए? Infinite. Whereas in case of finite impulse response filter, the length should be finite. Okay, so h of n का जो भी लेंथ होगा वो क्या आना चाहिए? It will be finite, which can be measurable. Next difference is this filter contains poles and zeros. That means IIR filter का जो भी ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें पोल्स और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है. बट इन केस ऑफ FIR filter it contains only zeros. That means let's suppose if we have h of z, that can be a transfer function of FIR filter. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 plus 2z, let's suppose 3z square 4z raised to 4 like this one. तो इस वाले केस में वी विल गेटिंग ओनली जीरोस. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. बट इन केस ऑफ IIR फिल्टर जो भी ट्रांसफर फंक्शन होता है वो मे भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है. लेट्स सपोज 1 plus 2z अपॉन 1 plus 3z plus 4z स्क्वायर प्लस कुछ इस तरह से होते हैं. So, इस वजह से इट कैन हैव जीरोस एज वेल एज पोल पॉइंट्स. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर एंड फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर. अब इसको याद रखना है तो सिंपल सा टर्म है इसका डेफिनेशन. डेफिनेशन के बेस पे हम पूरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो डिफाइन कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.